Hello everyone. Today we are going to discuss antihypertensive drug in continuation to previous lecture that we had discussed about few classes of antihypertensive drug like sympathetic drug and vasodilators. Vasodilators that we have discussed in arterial vasodilator, arterial venous, arterial and venous vasodilator, and calcium channel blockers. Calcium channel blocker like nifedipine, felodipine, amlodipine, deltiazem, and verapamil. Atrial vasodilator that is hydralazine, minoxidil, and digoxinide. Atrial and venous vasodilator that is sodium nitroprusside. Now today we are going to discuss about the angiotensin converting enzyme or AEC inhibitors. Angiotensin converting enzyme. What is the angiotensin converting enzyme? Angiotensin converting enzyme this angiotensin converting enzyme basically look at here, this angiotensin converting enzyme that is responsible for maintenance of the blood volume, or you can say blood pressure. This angiotensin converting enzyme responsible for blood pressure maintaining. And how they act, basically this renin is a hormone that is secreted by the kidney secrete the renin hormone, and this renin is responsible for the maintaining the blood pressure. And angiotensin, this renin angiotensin system that is present basically into the our body, and it is controlled by, you can say, feedback mechanism means depends on the concentration of the sodium ions as well as the volume of the, you can say, body fluid volume. So when, you can say, when the blood pressure get reduced, BP of our body get reduced, then the release of renin takes place, and the renin is responsible for, you can say, uh, lowering of the calcium, the sodium excretions. This sodium excretions will be lowered, and that is why, you can say, it is responsible. So now the renin will release the angiotensin, and angiotensin will convert in angiotensin first, and angiotensin first will convert angiotensin second, and angiotensin second will responsible for elevation of the blood temperature, blood pressure will be increases. So the angiotensin converting enzyme is responsible for conversion of angiotensin first to angiotensin second. So that is the important things. So these drugs, they are used here for the conversion of angiotensin first into the angiotensin second, and angiotensin second is only the responsible for binding with the receptor, and after the binding with the receptor, it is responsible for increasing the blood pressure by increasing blood volume by retaining sodium ions. So you can say blood volume or blood pressure will increase. So that is the, you can say, uh, that is fundamental about the angiotensin converting enzyme that is responsible for conversion of angiotensin first into the angiotensin second. So what are the basic things? Our basic aim to control the blood pressure, and blood pressure can, that we have discussed previously, that blood pressure will be increased by angiotensin second intermediate that is secreted, that is converted from angiotensin first to angiotensin second by AEC, sorry, ACE, angiotensin converting enzyme. ACE, angiotensin converting enzyme, responsible for the conversion of angiotensin first to the angiotensin second, and we know the angiotensin second concentration will increase, then angiotensin second will bind with the angiotensin second receptor and will, can say, increase the blood pressure. So our aim is to
control the blood pressure, we want to can say reduce the blood pressure. So what we have to do, we have to do the drug that can antagonize to the ACE, angiotensin converting enzyme. So we are discussing here the angiotensin converting enzyme inhibitors are the drugs which can be used here to control the blood pressure. So angiotensin converting enzyme inhibitors inhibit the ACE, and what happen, it can say blood pressure will not be increased because of angiotensin first will not be converted into the angiotensin second, and angiotensin second is responsible for the increasing or elevating the blood pressure. So that we have discussed in detail. Now the classifications of angiotensin converting angiotensin inhibitors. Angiotensin inhibitors we can classified into the three category depending on their chemical structure. First is the thiol, that is example is the captopril. Second is the analogues with the carboxylic acid moiety like enalapril, benzapril, lansoprazole and ramipril. And third is the phosphonates like uh, fosinopril, enalaprital and fosinopritals. So these are the important classifications for angiotensin inhibitors. The captopril, look at here the thiol category, because of it contains the thiol SH group. We will discuss now the SH group will be present in captopril. So the captopril is the active drug, and others enalaprital, benzapril, lansoprazole, ramipril, they all are the prodrug and containing the carboxylic acid as a moiety. So they are the prodrug. They are converting the active form when they reach in the system circulations. Like enalapril will convert enalaprital, benzapril, lansoprazole, ramipril. And similarly the phosphonate group S double bond O. The phosphonate group is present on the compounds, that is fosinopril, enalaprital or enalapril. So that we will discuss here, and we are seeing the one by one in the detail now. So look at here. The structure of the captopril here is the captopril. It's contain the SH group. There is a thiol groups, and this is heterocyclic nucleus, nitrogen containing 5-member rings, and carboxylic acid group is there. Similarly, the enalapril, another the multiple carboxylic acid analogues that we had discussed, and similarly the fosinopril, that is phosphate group is there. So that is the fosinopril. So this category of the drug, can say we are discussing the structure of the one by one each category. Like we have classified the thiol category, the captopril, and the analog of the carboxylic acid group analog, that is enalapril, and the phosphonate group containing, that is phosphanoprils. Okay, so that is about the angiotensin converting inhibitors. Now we are discussing the angiotensin receptor antagonist. Receptor antagonist means drugs which are responsible, which can antagonize the third receptors. So in where the second receptor will bind, these drugs will be bind and antagonize the action of second. Example is losartan, valsartan and saralacins. So the sartans, they are can say angiotensin receptor antagonists. We look at one structure of the one is the can say losartan contain the imidazole nucleus and tetraazole nucleus, 4-member tetraazole 1 2 3 4 5. So 2 2 1 2 4 5 tetraazole nucleus containing. So this is losartan, and losartan is the important drug that can antagonize the AEC angiotensin converting enzyme, AEC second antagonist. So they will be antagonized to the AEC second. Okay, so dear students, that is
that is all for today, that we are discussing here ACE inhibitor and ACE second antagonist. I am revising for 2 minutes in Hindi as you like, because you most of students they want the Hindi in Hindi. देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की हमने क्लासिफिकेशन पहले देखा, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आपका जो है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, वो हमने देखा, अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और सब जो है ड्रग हमने देखी। उसके बाद हमने वेसोडायलेटर्स देखे जो कि आर्टरियल डायलेट करते हैं, आर्टरियल और वेसल्स डायलेट करते हैं। उसके बाद के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देखे हमने। आज हम देख रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो क्या है, वो एक्चुअली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। रेनिन एक हार्मोन है जो कि कौन किडनी सिक्रीट करती है, और किडनी क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है ये क्या करता है, सोडियम आयन का एक्सक्रीशन को कम करता है। सोडियम आयन का एक्सक्रीशन कैसे कम करता है कि ये आपका एंजियोटेंसिन सिक्रीट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है, और सेकंड जो है मेनली वो रिसेप्टर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसमें हम कैटेगरी देखते हैं कौन कौन सी ड्रग की एग्जाम्पल थी। इसमें 3 क्लास में पार्ट दिया, थायोल कैटेगरी का जो है कैप्टोप्रिल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड मोइटी वाला एनालाप्रिल, बेंजाप्रिल एंड लेनिसोप्रिल एंड रेमिप्रिल, एंड फॉस्फोनेट जो कि फोस्फिनोप्रिल, एनालाप्रिटल और फोस्फिनोप्रिटल। एक एक स्ट्रक्चर देखिए इसमें थायोल ग्रुप है आपका, ये एसएच ग्रुप, ये कैप्टोप्रिल है, एनालाप्रिटल में कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, और ये फॉस्फोनेट ग्रुप में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कंटेनिंग फॉस्फोरिक एसिड कंटेनिंग फॉस्फोनेट ग्रुप, दैट इज फॉस्फोनोप्रिल। दूसरा जो है हम देखा हमने एंटागोनिस्ट, जो एनालाप्रिटल एंटागोनिस्ट क्या है, जो कि एसी सेकंड जो है मेनली क्या करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर उसको आपका एलिवेटेड करता है। तो इसको क्या ये लोसाटेन और वाल्साटेन बाइंड करेगा और उसका एक्शन को इनहिबिट करेगा। तो ये हमने देखा कि आपका एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्टिंग एंजाइम अगर इसको बाइंड कर देगा, लोसाटेन जो है एंजियोटेंसिन सेकंड को बाइंड नहीं होने देगा, तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर लो डाउन हो जाएगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक तो होता है टेट्राजोल न्यूक्लियस, 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, जिसको 1 2 और 4 5 टेट्राजोल न्यूक्लियस। एक होता है इमिडाजोल न्यूक्लियस, 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग। और ये जो है लोसाटेन वो क्या करता है, जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड होता है और उसको जो एक्शन देने से क्या कहते हैं बाइंड करता है और एक्शन नहीं दे पाता और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपरटेंसिव एक्शन शो करता है, मीन्स एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो करते हैं। तो आज हमने 2 कैटेगरी डिस्कस करी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंटागोनिस्ट। वी कैन से angiotensin antagonist or receptor antagonist. Okay, so that's all for today. We will discuss in next class about the diuretics used as a antihypertensive drug. So that's all for today. Thank you very much.